will be happy to know your journey, sir, from a start. Let's summarize in your language, in your voice. Please, sir. From the So childhood, we how? will be happy to know. All right. And in the See, middle, we will be asking questions where we will be feeling like, yeah, this is important. Yeah, and absolutely, we would like you to keep it as raw as you can Please. because that is the motto behind our podcast. absolutely. Yeah. So see, I belong to a military family. Oh, nice. My grandfather was in the Air Force. He worked in the Wapati engines. He was an engineer, and he got his aeronautical degrees and all when he went to London, and then he contributed to the Indian Air Force. As a family tradition, and it has been told to us that we have been soldiers from the very beginning. So I have heard stories of my grandfather telling me that we were normal soldiers in the army of uh, the gurus, and we fought numerous wars. So that was very. I think it is engraved in the DNA that you have to sometime in your life wear the uniform. My dad is an ex-NDA, and I'm so proud that he's no more with us. I lost him in 2017. However, he was one of the fastest men in NDA, National Defense Academy, and he was nicknamed as Atom Oh, because he was pretty fast. So we hear these glorified kind of stories and all, and my chacha was one of the bright and the brightest in his course. So he was one of the best cadets. So these are the flavors that we've grown up with. I have been, I would say, not very bright. I was very average. However, you have to walk the path that has been chosen for you. And I discussed with my dad that look, I don't think I'll go very far in my life. So my dad said that look, you have to be a lambi race ka ghoda. He used to always tell me that you have to be a long distance runner, and you cannot be a 100-meter sprinter. So I see, and he used to encourage me that I see a lot of stamina in you to pull because I see you study, you struggle, but you are at it, and you're an honest giver, which encouraged me. I don't know whether he was trying to pacify my weaknesses or whatever, but like a true father, he told me that Rahul, you're a marathon runner. So someday you will overtake a guy in front of you, maybe just one guy, but do complete the race with all honesty. So I think that is what I'm trying to do. And when it came to choosing a career for myself, my dad said that look, the generations in our family have served the army. So I would like you to basically take a break, but the bug of the uniform is such that it doesn't leave you, and you've seen your father, your family wear the uniform. So I consciously decided that let me join the forces for a stint, and I joined in 2000 Officers Training Academy as a short service officer, and I left in 2006. So I so gave what is this short service officer? Like, yeah, exactly. so short service. So there are three kind of entries. One is after you have completed your 12th, and the military gives you a graduation degree from Jawaharlal Nehru University. That's when you enter NDA as a teenager who's like 16, 17 years. And then he gets graduated in a military establishment, which is National Defense Academy. Or the second is that you become a graduate and you put in whichever degree you want in 3 years, and then you join the Indian Military Academy. Or if you don't want to serve your entire youthful life in the army, that is 21 years, when you get your pension, you opt for a smaller stint, which is just like the Israelis do, or maybe the Americans do.
Right. But here in India, it's more voluntary rather than the state telling you that you have to be in uniform. So it's a army which seeks volunteers. So we volunteered for a tenure, which is of 5 years, in which I got inducted in the armored corps, which had the T-72 Russian tanks, and I enjoyed my stint. It's absolutely beautiful, and I, through your podcast, I encourage everybody to experience and try to give their best shot and don the uniform for a limited period of time, if not your life, and experience what means to be in uniform. Yeah, And one thing I miss to mention, sir, you are looking great today. And Yeah. that hat on your I head, it's I just so. have I have tried my best to look good with you youngsters. You both are absolutely looking dashing. Had you Thank you, sir. shaved, you would have looked much better. Yeah. Uh, it's still better for me. So touching to see the flag and people rallying around the flag. I think when we were in the forces, Godspeed to one of my very dear senior subalterns who gave his life, and he came wrapped in the flag, and that is the time you basically see the importance of of what the flag means to you, because I mean, you serve and that flag is basically with you when you are no more as a soldier. So I think that was very touching, and whenever I see the flag and the flag basically being hoisted, it's a very touching moment, and it's a very peaceful kind of a moment. So it must be done numerous amount of times, and I think the government is taking due steps to recognize that the flag is hoisted in each house, each government building, private building, and I think the flag should be there on our everyday rig also. So Yeah. Armour Heavy, which is my brand, has a Patriot collection which celebrates the national colors. Just like you have the Tommies of the world, which use the Queen's colors. You have Levi's, which has the red, and they use the American colors. So our colors are equally brighter, equally, Right. should I say, haloed. So why not? Our youth should must basically wear those and celebrate these colors. Yeah, I personally feel it is much better than those, the color that we have. absolutely, Like you are absolutely, wearing one of t-shirt from Armour Heavy, right? absolutely. Yeah, yeah. Yeah, it is. It's really looking good, and Thank it's you, thank you suiting so you. much. And what you have mentioned, like I didn't know that Armour Heavy is celebrating the colors of India behind its as a brand or as brand that is going to present itself out in the world. Absolutely. So my underlying vision of having this brand is basically the team that should have a kind of a collective vision. So our vision is nation as the next fashion statement. Yeah, And when we say nation as the next fashion statement, it basically means that you have Bollywood celebrities wearing NY cap, Gucci, yeah, Gabbana. They are flaunting all these things. They are flaunting NASA. They are flaunting the American flag. The youth is flaunting the American flag, Italian flags, and it's part of fashion. So fashion is something that grows on you because it's fashionable. But yeah, however, the Indian industry has not been able to put nation in fashion. It's very difficult. So in the erstwhile India, wherever you had the Tiranga, it used to be a पांच पैसे की t-shirt. Literally, I'm telling you, to be very honest. एक झंडा लगा देते थे वो लोग, और they used to think that the youth will wear it. No, the youth will wear if it looks good, if it looks solid, if it is like Captain America, because the entire facade is being created around the flag. So there's a deep rooted thought behind Captain America. He's a soldier, he's wearing the flag colors of a nation. Similarly, if you see Netaji when he was developing his flag,
with a leaping tiger. It was a very powerful flag, and the youth wanted to be part of that engine, Indian National Army. So I took Yeah. out a Indian National Army collection also, which got sold out. Of course, we are too young. I'm just talking in ether. I'm just talking in air as of now, and many people will say he's. But you have to have some kind of a start, right? Yeah. You have You to have Perfect, to have. have a perfect. vision. Yeah, At absolutely. least You have to then only have. you will be able to achieve something. Absolutely. If you are in a race, either you are running the race slowly or fast, but at least you are there in the race. So I would say we are very, very small. We are nothing as of today, but we are in the race. And sooner or later, as we build our stamina and pace, you will see 5 years from now, Nike or Adidas will also consider us as an opponent. So Yeah. very soon, with all blessings of everybody. आई पर्सनली फील सर कि ये चीज़ें पता है हमारे कल्चर में भी कल्टीवेट होती है बिकॉज इफ समवन इज वेयरिंग अमेरिकन थिंग और द नाशा एज यू हैव मेंशन्ड लाइक ये चीज़ें एंड द सेम थिंग हैज बीन डन बाय जो इंग्लिश पीपल like they have cultivated English language into our society. Like we know better English as compared to Yes. हिंदी. अपन हिंदी बहुत कम जानते हैं. हिंदी में अगर अगर हम बोले कि 10 मिनट लग तक नॉट 10 मिनट 5 मिनट तक भी अगर लगातार हिंदी में बात करना हो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस. वी Yeah. जस्ट यूज हिंदी एंड इंग्लिश. सो आई पर्सनली फील अगर अगर आपका ब्रांड अपना ब्रांड अगर नाइकी और इन लोगों को अपोनेंट एक अच्छा ओपोनेंट बना सकता है इट इज़ गोइंग टू बी a great, like it is going to embed into our culture that will be Indian origin, And Indian kind of thing. this Absolutely. and See, this thing has always bugged me whenever I thought of starting a company or anything. But why we don't have Indian branch in the international market, and we have great entrepreneurs in our country. absolutely. See, Yeah. when I was wanting to start this brand, I told myself, name top three Indian brands which are aspirational as not in Yeah. scale, not in sales value, but aspirational, and they are head to head with the Nike Puma. And I started thinking, and nothing came to my mind. I Yeah. said, why are we? And then I went to the automotive industry, and then I went to the electronics industry, and then I went to any other industry, eatables, maybe franchises like a McDonald's and all. So we are nowhere. Yeah. We develop as Indians great businesses, just like a Reliance. Yeah. We develop absolutely brilliant businesses. We have a knack of it, but we are very, very poor in making brands. Yeah. On the That's other hand, the West is crazy in making brands. You take and name anything that these guys have done. It's not a profitable company, but rather it's a great brand. So brands will always be in fashion, remember, yeah. and good companies will always be in usability. Usability is good. Like a lens cart is there. I Yeah. met Mr. Bansal. Like the lens cart is there. It can. I told him it can never beat the aura of a Ray-Ban because lens cart के चश्मे मैं पहन के आया हूँ आज पार्टी में. It's never going to thrill because it. आपने बच्चे का नाम ही ठीक नहीं रखा. आप Yes. बच्चे का नामकरण तो ठीक करिए. Yeah. आप समझ रहे हैं मेरी बात. आप अपना जब बच्चा करते हो आप तो बहुत यंग हो, बट आपके मम्मी पापा ने जब सोचा होगा आप लोगों का नाम बड़ा पेशेंटली 6 महीने लड़ाई हुई होगी, थोड़ी बहस हुई होगी, फिर जाके बच्चे का नामकरण होता है. तो फॉर यू गाइज IIT ग्रेड पीपल, when you will go and name your product, you will name your product with a lot of thinking. Yeah. So that does it have virality? Can it get virality? Does it have legacy? So I would give, I am not blowing my own trumpet, but I thought through it. And Armour Heavy, when I was actually keeping the name, I wanted to keep it Atom because my dad was nicknamed Atom. And Yeah. Atom is supposed to be the fastest, and it is the most basic element Basic element. on earth, right? So I said that I will keep the sporting brand as Atom. But atom.com में available नहीं था. Hmm. वो यूरोप में 15 लोगों ने ले रखा था, अमेरिका में कम से कम 30 लोगों ने ले रखा था.
.com, .in, .us. You understand? So keeping a brand name is not easy. Yeah. So I said I'll keep it atomic. एटॉमिक भी ले रखा था, फिर मैंने बोला कि मैं फायर रखता हूँ, फायर भी ले रखा था, फिर मैंने बोला यार क्या रखूँ, स्टेल्थ रखता हूँ, तो स्टेल्थ भी ले रखा था लोगों ने। सो एक बात होती है कि आप ब्रांड नेम चूज कर रहे हो, दूसरी बात होती है डिजिटल सैचुरेशन कितना उस ब्रांड का। हाँ. सो आई वेंट टू द मिलिट्री आर्काइव्स, आई बिलोंग टू द आर्मर्ड कोर। आर्मर कोर में बेसिकली आर्मर्ड कोर इज टैंक्स, टैंक वॉरफेयर। सो टैंक वॉरफेयर में एक टैक्टिकल टर्म होती है विच इज कॉल्ड आर्मर हैवी, Okay. जो मेरे ब्रांड का नाम है। Hmm. आर्मर हैवी का मतलब होता है इट इज गिवन टू अ फाइटिंग सिस्टम, system of weapons which is undefeatable. So it is basically a system of weapons so formed that if they move and attack in stealth, it's undefeatable. मैंने कहा यार ये बड़ा अच्छी स्टोरी सी आ रही है इसमें, सही वाइब आ रही है। इसमें हाँ. इसमें वाइब आ रही है भाई, इसमें वायरलिटी आ रही है इसमें। मतलब हाँ. BMW जैसे था ना कि प्रोपेलर बना हुआ है उसके लोगो में, हाँ. जब लोग रिसर्च करेंगे ये आर्मर हैवी है क्या, ऐसी रख दिया क्या, तो हाँ. उसमें हिस्ट्री आ रही थी, लेगेसी आ रही थी। मैंने कहा ये टैक्टिकल टर्म रखते हैं। तो लोगों ने बोला यार ये अंडर आर्मर की थोड़ी सी फीलिंग दे रहा है। मैंने कहा तो पेटीएम और पेपैल और पेयू और भारत पे हाँ. और लेंसकार्ट और फ्लिपकार्ट और वुडलैंड और टिम्बरलैंड दुनिया भर का, फिर हमने ट्रेडमार्क कराया, ट्रेडमार्क मिल गया, हमने कहा बस सॉर्ट आउट हो गए भाई। अभी हाँ. हम किसी का इन्फ्रिंजमेंट वगैरह नहीं कर रहे, हम टिम्बरलैंड वुडलैंड जो भी है, Hmm. जो भी समझ लो आप। आर्मर हैवी is not something that I've kept seeing anything, but as a Right. military veteran, it was very close to me because when we used to do bridgehead, I don't know whether you know the bridgehead tactics, उसमें आर्मर हैवी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है। अगर किसी मिलिट्री वेटरन से आप मिलोगे और Hmm. पूछोगे कि आर्मर हैवी क्या होता है, कहता है कि यार दैट इज द वे टू अटैक। जैसे Right. ब्लिट्सक्रीग होती थी इन द नाजी जर्मनी, दे कॉइन्ड ब्लिट्सक्रीग, वैसे ही आर्मर हैवी एक इट इज अ वेरी पावरफुल टर्म टू अटैक, पेनिट्रेट, अनस्टॉपेबल। तो मैंने कहा यार ये स्पोर्टिंग कैरेक्टर है, so let's keep it. So that's how I coined the this thing. So you were asking some question that मैं ना digress कर जाता हूँ कई बार, so No, just we are. continue. Perfect, This is the perfect. way We are how just the yes, this we is the are. way how podcast is going to be. Yeah. Yeah. And So So we so I can see a hint of a person who has been in marketing. You have been in marketing. I have seen in your LinkedIn. Like when we talk to normal, I mean someone who is not been in marketing or branding position in a company or in that sector, we don't see people focusing on branding, and that is what happening in Indian companies or startups. And yeah. so, how you transform from a career in army to a career in marketing? See, my father told me, and he has been a great mentor. So he did not know anything about the corporate, but he told me that look, the military was one of the most erstwhile professions. जब ये धंधे धुंधे नहीं थे तो फौज तो थी, भाई Yes. कबीला था, कबीले की फौज होती थी, फिर कबीला बड़ा हुआ, राज्य बना, फौज तो थी। तो फौज तो थी हर टाइम से। सो यू बेसिकली सी व्हाट यू हैव लर्नड इन द आर्मी, बिकॉज आर्मी एंड कॉर्पोरेट, अब कॉर्पोरेट में भी आर्मी टर्मिनोलॉजी हो गई है, वॉर गेमिंग करें, ब्रेकआउट, Okay. ठीक है, दीज आर Yes. ऑल मिलिट्री टर्म्स, Yeah. यू अंडरस्टैंड, रिकॉनेसेंस, इंटेलिजेंस, मार्केट इंटेलिजेंस, these are आई all these are all military. So he told me that look Rahul, I am not a great guide for you to tell you something about the corporate, and you have to take whatever I am telling with a pinch of salt, So because no, I've been no, a soldier throughout. we will be happy to know like how you transform. Like ये पहले से था कि नहीं मेरे को कॉर्पोरेट में जाना है or something like that. Yeah, I want to. था पूरा प्लान था, पूरा प्लान था। अनप्लान तो यार कुछ काम ऐसा सच करता नहीं है, तो थोड़ा बहुत प्लान था कि 5 साल सर्व करेंगे, अच्छा और 5 साल के बाद जब आप थोड़े से रेडी हो जाते हो इन टर्म्स ऑफ मेच्योरिटी, then there is a resettlement course that the military gives you to transition. So the military also knows कि भाई एक young लड़का जब फौज से निकल रहा है, he needs to be transitioned and a bridge needs to be there for him. Yeah. So we did MDI Gurgaon, you must have heard, Management Institute.
which is there in Gurgaon, MDI Gurgaon. Yeah. वहाँ हमारा resettlement हुआ, that from military to corporate, what is the kind of things that you need to know. But that is more on paper and just to tell the corporate that, look, these boys now know a lot of stuff that you guys talk about. And indeed, in those 6 to 8 months, the institute does teach you a lot. But at the heart, you are still a soldier, because as a boy you have been trained for soldiering. So when I entered my interview, I cracked the admin interview. So my dad said, यार तू admin तो फौज ही चल, तूने क्यों छोड़ी, तूने अगर admin ही करना है तो फौज में Hmm. रहता. Hmm. So he said that you choose the profession that you dreamt for yourself. And I'm sure that you have been very creative and all, and he's seen me grow. So Okay. बाप होता है, उसको exactly पता होता है. So he guided me. So I said to my interviewer, sir, I will join marketing. So he said that भाई marketing तो कैप्टन साहब आप ज्वाइन नहीं कर सकते, उसके लिए तो स्किल चाहिए होती है, Hmm. उसके लिए पता होना चाहिए क्या क्या होता है. तो who's your marketing guru? तो मैंने बोला, सर मैंने तो किताबें ही नहीं पढ़ी, मार्केटिंग गुरु कहाँ से आ जाएगा. आई हैव I'm हार्डली रेड never into कॉटलर. this. हाँ, कॉटलर एंड केलर थोड़ा सा पढ़ा था एमडीआई में. Hmm. इतनी मोटी किताब थी, उसमें बस मतलब 100 पन्ने भी नहीं पढ़े होंगे हमने ठीक तरह. 4 पीस 7 पीस वगैरह हमने थोड़े बहुत पढ़े थे. Hmm. So I said that, look, sir, I don't have any guru as such, but I admire certain military leaders. No matter how bad or good they were, it is just for what they did and what they achieved. So he said, whom do you admire? मैंने कहा, sir, I admire Adolf Hitler in some sense, Okay. because from the ranks he grew up to be a Führer of a country, and a 16-year-old boy was ready to give his life on his speeches. Hmm. So he actually, that's marketing for me, when somebody is ready to give his life for you, right? Perfect. For that matter, any military leader who leads the men in such a fashion that they are ready to take a bullet. I said that's a very supreme and a noble form of, in today's world, marketing. साबुन बेचना है ना सर, यहाँ तो जान आदमी निछावर करने के लिए रेडी, तो साबुन तो छोड़ ही दो आप फिर. Yeah. So he liked my answer. He said that, look, I'll give you a chance. I'll give you a chance in marketing, and you go to and sit in the marketing communications enclosure. That was supposed to be a very good enclosure where intelligent people are there. तो IM वाले भी आपके थे वहाँ थोड़े बहुत Okay. लोग, और वहाँ जाके मैं बैठ गया. I was a complete failure for the first 1 year because I was learning. I did not know, so I was a complete failure. Failed so much so that my boss got so frustrated कि इसको तो कुछ पता ही नहीं है. Excel करो अभी. As a soldier we have not, So, we know Excel but not so well कि Yeah. आपके quirky formulas वगैरह लगा रहे हैं और बिल्कुल मतलब बढ़िया से Excel को. आजकल लड़ाई Excel और PPT में चलती है कॉर्पोरेट में. So you will also see when you join any company, the fight is of a Excel which gives you the true numbers, and the presentation from that Excel, that how well you are presenting, right? Your message, your point. So those were two things that I didn't know at all. So धीरे धीरे सीखा. I think my second job was a more matured. My third job was even better. I excelled, and to an extent that my team members started saying that, sir, आप जैसा हमने as a manager we have not come across such a great person who is teaching us the basics. मैंने कहा मुझे basics ही पता है, इसलिए मैं आपको basics बता रहा हूँ. So I am not a guru at anything. So I learned. I think 18 years I spent in companies like Accenture and Pfizer and American Cyber Systems and all these companies. My last stint being head of marketing. And then I discussed with my family that I want to leave and I want to do something that I have envisioned for myself, which is starting a fashion brand. And this underlying vision that has always been with me of nation as the next fashion statement. So I said, यार भारत को एक फैशनेबल लेबल हमें देना है. अभी अनफैशनेबल हो गया, तिरंगा लेके चलता है तो बोलते हैं यार देसी आदमी है.
थोड़ा कुर्ता पहन लिया तो बोलते हैं सही। देसी आदमी है। वो ना ट्रेंड अभी चेंज हो रहा है, अभी टी शर्ट भी पहनो, लेकिन भाई मैं जो कपड़ा भी ले रहा हूँ मेरा चाइना से नहीं आ रहा। I have राइट। made a conscious decision that it will be somebody who's giving the best cloth, and which is the company which is giving best cloth is Reliance. Reliance का जो कपड़ा है वो absolutely ultimate है. Through this podcast I'm telling you I've experienced it. I ओके। think Hexarel करके एक division है, they are giving very good cloth. So where I am sitting as of now, it's called Noida. Noida is the apparel capital of India. So हम ऐसी जगह बैठे हैं जहां से next Nike from India हम बना सकते हैं. क्या सो दैट इज संक्षिप्त में मेरी हिस्ट्री प्रोफेशनल. आगे बढ़े. सो लाइक इज जब आपने जॉब छोड़ा, देयर विल आई थिंक देयर विल बी अ लॉट ऑफ फ्रिक्शन देयर कि यार अपन एक वेल एस्टैब्लिश्ड जॉब एंड एज यू हैव मेंशन लाइक यू आर द हेड ऑफ मार्केटिंग देयर, सो फ्रिक्शन नहीं था, हाउ डिड यू ओवरकम दैट फ्रिक्शन लाइक? जिंदगी में ना सबसे जो सस्ती चीज होती है जिसका कोई कॉस्ट नहीं होता, लेकिन मैंने रियलाइज किया वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्लीप. अभी आप तो बच्चे हो, आप पढ़ते हो, सो जाते हो, करेक्ट? राइट। हैव यू एवर थॉट दैट स्लीप इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट? नॉट रियली. क्योंकि आपको आ जाती है नहीं. हाँ जब ऑब्वियसली। मैंने छोड़ा, जॉब छोड़ा, मेरे पास पैसा पूसा कुछ था नहीं. यस। मैंने सारा पैसा डालने की कोशिश करी, फ्रेंड्स एंड फैमिली से बोरो किया. फैशन इंडस्ट्री बहुत ही कॉस्ट इंटेंसिव इंडस्ट्री है. आप मतलब मानोगे नहीं, उस टाइम मेरी जो नींद गई है ना, आई रियलाइज द वैल्यू ऑफ स्लीप. आई कुड नॉट स्लीप बिकॉज ऑफ द टेंशन एंड एंजाइटी. आई स्टार्टेड टेकिंग, देयर इज अ स्लीपिंग पिल कॉल्ड जोल फ्रेश. उसके बिना मुझे नींद नहीं आती थी. एंड आई यूज्ड टू क्राई इन अ कॉर्नर. आई सेड व्हाट हैव आई डन? I understand that I am walking on a very difficult path, and I'm walking on a thin line. मैं थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ेगा, इतने केपेबल ब्रांड्स हैं मुझे गिरा देंगे. And I lost my sleep. So my 2 cents to everybody who's starting: start when you are ready, and be ready to give everything, including the most precious thing that is there, which is sleep. स्लीप। आपकी नींद उड़ जाएगी धंधे में. धंधा आपकी नींद, बोलते हैं ना नींदें उड़ गई, ये पुरानी बहुत पुराना मुहावरा है. भाई उड़ती है ना जब नींद, तो आप पागल हो जाते हो. यू आर लाइक अ ज़ॉम्बी. आई कंसल्टेड द डॉक्टर एंड ही सेड दैट सर, इतनी एंशियसनेस है, जो कॉर्टिसोल लेवल है आपका इतना चढ़ा हुआ है, आप मत टेंशन लो इतनी, योगा वोगा करो. Then I started running, that started doing everything. Started controlling and calming myself. Because he is धंधे में क्या है, सोर्सिंग रॉ मटेरियल, सही कॉलर कहीं बात। से आता है, लेबलिंग कहीं से होती है, प्रिंटिंग कहीं से होती है, उसका टेक्नोलॉजी लेयर, बार कोडिंग, चढ़ाना, लॉजिस्टिक्स पहुंचाना, कस्टमर इकोसिस्टम को संभालना, रिटर्न्स, नई कलेक्शन, फोटोशूट्स. इट्स अ मैड हाउस. आपको लगता है कि फैशन ब्रांड, बट इट्स अ मैड हाउस. जब ब्रांड बन जाता है तो उसको प्रमोट करना, उसको बड़ा करना, इन्वेंट्री मैनेज करना, डेड स्टॉक मैनेज करना, लॉसेस मैनेज करना, इट्स अ मैड हाउस. एंड फॉर दैट मैटर आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट माई इंडस्ट्री, एनी धंधा दैट यू गो, यू विल स्ट्रगल. स्ट्रगल तो भाई होनी है, चाहे तुम आईआईटी से हो या आईएम से हो, स्ट्रगल तो होनी है. वो कोई आईआईटी आईएम नहीं सिखाएगा आपको कि धंधा कैसे करना है. राइट। धंधा तुम खुद करोगे, एंटरप्रेन्योर हो, अपनी यूनिकनेस लाओगे. कॉपी करके ये बड़े बड़े जो प्रचार करते हैं कि हम आपको धंधा करना सिखा देंगे, धंधा करना अगर तुम सिखा सकते तुम कर लो ना. सही बात तुम कर लो है। धंधा. तुम सिखा रहे हो तो तुम कर लो. कई लोग कहते हैं हमने छोड़ दिया, हम सक्सेसफुल हो गए, अब हम सिखाएंगे तुम्हें. तुमने क्या उखाड़ा? कोई बहुत एस्पिरेशनल ब्रांड बनाया भारत के लिए? सही। तुम पहले टाटा बनो भाई, तुम पहले अरमानी बनो, उसके बाद. वो भी अभी धंधा करना नहीं सिखाते, हाँ। वो भी नहीं सिखाते धंधा करना, क्योंकि उनको पता है कि जिंदगी निकल जाती है. ठीक है, तो फिर ये ज्ञान ध्यान छोड़ो. अगर आप में विजन है तो अपनी विजन है, और अपनी स्टोरी है, और अपना स्ट्रगल है, और अपनी सक्सेस है,
और अपना एस्पिरेशनल ब्रांड बनाओगे और देश के लिए बनाओगे, यहीं से बैठ के बनाओगे, लेकिन अपनी जर्नी होगी तुम्हारी, किसी से सीखी हुई नहीं होगी वो। हाँ ठीक है, तुम यार ट्यूशन तो लोगे, सुनोगे, इधर उधर की बात करोगी तो अपनी, दैट्स हाउ यू विल क्रिएट यूनिकनेस, राइट? पीपल हैव टोल्ड मी अ लॉट ऑफ थिंग, ऐसे करो ऐसे करो, मैंने कहा भाई रुक जा, पहले टीचर की सुनी, फिर मैंने फौज में उस्ताद की सुनी, पेरेंट्स की सुनी, फिर मैंने बॉस की सुनी, अब तेरी सुनूं? एक के आदमी एंटरप्रेन्योर बन गया हूं, मैं अपनी सुनूंगा? हाँ, समझ रहे हो? इज इट कैंडिड इनफ फॉर यू गाइज? मैंने या कहा मैं अपनी टोटली, बिकॉज सुनूंगा भाई, हाँ, अभी तो मुझे सही चलाने है, दे, या अभी भी सिखाएगा? लेकिन लेकिन धंधे में हो तो सिखाएगा, तो हर कस्टमर भी सिखाएगा, कस्टमर परफेक्ट, पलट के बोलेगा, दैट्स लर्निंग, सो दैट विल नेवर एंड। बट ऑन ऑल आई एम ट्राइंग टू से इट्स योर जर्नी, इट्स योर एक्सपीरियंस, लिव इट, जस्ट लाइक यू आर क्लाइंबिंग अ माउंटेन। कोई प्रॉक्सी थोड़ा ना जाके तुम्हारे लिए पहाड़ चढ़ेगा, अरे मजा आ गया यार, क्या पहाड़ था, तुम्हें थोड़ा ना मजा आएगा, तुम प्रॉक्सी प्रॉक्सी थोड़ा ना चढ़ेगा तुम्हारे लिए। हाँ, So that's what I'm telling. It's a journey, very beautiful journey. But mind you, you will lose your sleep. So try to mitigate it. Tension कम लो, plan ज़्यादा बनाओ. It is a beautiful journey. You will fail, and you will fail completely. कुछ और करना पड़ेगा. But nevertheless, it's one life. Try तो किया. सही सही, भागे हाँ, तो सही. ऑडियंस में तो ताली नहीं बजा रहे थे. तो किया परफेक्ट। ना. तो ट्राई कर रहे हैं यार. आर्मर हैवी अगर सक्सेसफुल होगा तो देश के लिए बहुत अच्छा ब्रांड बनेगा, नहीं होगा तो एटलीस्ट आई से मैंने ट्राई किया. At बट least एज अ followed your सोल्जर intuition. आई विल, but या हाँ, एज अ सोल्जर आई विल नेवर से डाई. Perfect. This is the perfect blend of entrepreneurship and soldier. एक्चुअली एब्सोल्युटली. यू कवर्ड माय नेक्स्ट क्वेश्चन आल्सो। मतलब मैं पूछने ही वाला था कि आजकल ज्ञान का ओवरलोड बहुत हो रहा है। बहुत हो रहा हर भाई. हर कोई बस ज्ञान दे रहा है बैठ के कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, हम्म, 10 दिन में कैसे बनाए या $1 बिलियन स्टार्टअप कैसे बनाए। हाँ. बट एंड उसकी वजह से क्या हो रहा है, लोग स्टक फील कर रहे हैं। दे नो बिकॉज दे थिंक कि these are the people able to do it in just 3 months or in a year, why I am not able to do? But they यस. don't know the harsh reality कि ओवरनाइट कुछ नहीं हुआ है। वो जो आपको एब्सोल्युट. बता रहा है वो आगे उसने भी अपना स्ट्रगल किया होगा, बट वो आपको बता रहा है। तो वो बोल रहा है कि मैं 6 महीने में तुम्हारा धंधा बना दूंगा, बट ऐसा नहीं है। भाई एब्सोल्युट. किसी का बन रहा हो या ना बन रहा हो, वो तो जरूर बना ले रहे हैं एंड तीन इट्स महीने and it's surprising for me that you were in the army, and you must have your own pressure where you must have learned how to deal with the pressure and all those situations, and for a person like you who was in the army इतना difficult था, so I can just imagine कि normal भाई लोग जब आर्मी में ना, आर्मी में जब हमारी एक्सरसाइजेस वगैरह होती थी टैंक के ऊपर, एक अच्छा सा मैं दरी लगाता था, टैंक के पीछे इंजन कंपार्टमेंट होता है हाँ, रेगिस्तान में, क्योंकि बिच्छू बिच्छू सांप सूप होते हैं, तो हम टैंक के ऊपर सोते हैं. तो टैंक जब रुकता था, कहीं भी रुक जाता था, एक छोटे से पेड़ झाड़ के नीचे, और रात को रेगिस्तान हो जाता ठंडा, थोड़ा सा पानी मारते थे, एक दरी बिछाते थे, टैंक के ऊपर सो जाते थे. भाई उससे अच्छी नींद ना, उससे अच्छी नींद कभी नहीं आई. फौज में जो नींद आती है ना, बहुत बढ़िया नींद आती है, क्योंकि आप थक हार के टेंशन फ्री आप सोते हो. लेकिन जब धंधा बनाते हो ना, वही जो नींद है वो चली जाती है. बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, see, a soldier is a very different being. He is being looked after to give his life. सही, उसकी फैमिली, भारत की सरकार बोलती है हमारी प्रॉब्लम, आपका रहन सहन हमारा प्रॉब्लम, लेकिन तुम्हारी जो जिंदगी है ना वो मेरी. तो जिंदगी मैंने गिरवी रखी हुई है, नींद गिरवी नहीं रखी है. लेकिन जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो नींद गिरवी रख लेगा तुम्हारी. तो that ये is फर्क है, extra difficult. ये फर्क है. तो ये टेंशन जो है ना, वो एंटरप्रेन्योरशिप इज अ जर्नी. उसमें ना सोल्जरिंग काम आएगी ना कुछ आएगा भाई. इट्स अ डिफरेंट एनिमल, इट्स अ डिफरेंट एनिमल. But और I आई personally विल feel, आई विल आई विल टेल यू जस्ट अ स्मॉल रिबट, सॉरी टू कट यू शॉर्ट. नो नो, जब जब एक बंदा इंजीनियर अच्छा होता है ना, तो उसको तुम कुक मत बनाओ. और जब एक आर्टिस्ट अच्छा होता है, उसका फ्लेयर है आर्टिस्ट बनने का. लाइक आई एम क्रेजी अबाउट ब्रांड्स, या Rudolf Dassler, R.D. Dassler, the boys who were in Bavaria. They started off a brand called Adidas, and then his brother started Puma. पूमा, These stories intrigued me.
मिस्टर मिस्टर उनुत्सुका, काफी लोगों को बुरा लगेगा अगर मैं बोलूंगा कि जो उनुत्सुका का लोगो है, वो फ्लिप अगर कर दो, आप फ्लिप कर दो उसको, तो नाइकी का शूज बन जाता है। ओके। ठीक है, तो चलो, एनीवेज इट्स अ कॉन्ट्रडिक्शनल दिस थिंग, बट इवन इवन अर्स्टवाइल रीबॉक जो ब्रांड रहा नहीं, उसका लोगो और उनुत्सु का लोगो। सो जूता बनाना तो भाई जापानियों ने सिखाया सारी दुनिया को कि ओके। जूता कैसे बनता है, और सी बनाना सिखाया तुम्हें पता है किसने। सो एनीवेज वी विल नॉट, चार्ली बनाया सिखाया वो वेस्ट ने सिखाया, बट जो इंजीनियरिंग थी वो जापानीज की थी। वी शुड गिव इट टू देम। Mr. Onutsuka, we have to give it because he is the guy who actually started, but he was not enterprising, virality वगैरह. So that's a different thing. But what I'm trying to say is that if you have a vision and passion for something, nurture it. If it can become a what do you call business, make it. बट डोंट ट्राई टू ओवर इंजीनियर। आप आईआईटी वाले हो, ओवर इंजीनियरिंग किसको कहते हैं? नट कसना होता है, कस देते हो तुम कुछ और लाके, उसको कहते हो ओवर इंजीनियरिंग फौज में। डोंट ओवर इंजीनियर। इफ देयर इज अ नट टू बी स्क्रूड, जस्ट स्क्रू दैट। ताम झाम लगा के उसको कॉम्प्लेक्स क्यों कर रहे हो तुम? यू अंडरस्टैंड? सो राइट। डोंट ओवर इंजीनियर द थॉट। इफ यू हैव अ पैशन, if you have a passion to work and work well, be a worker. There is nothing wrong or not so unfashionable that you can't work for somebody. Work for a Tata, he'll give you crore of rupees. But if you want to solve a problem and you have a passion, just like maybe me, that I want to make a brand, then go for it. So, like, I always wanted to build a Indian brand, और I thought काफी पहले before coming to IIT that I will bring Indian artists and उनको उनके साथ मिलके I will create a brand that puts Indian goods out in the international market and brand themselves as Indian, and वो हमारे जो ट्रेडिशनल आर्ट है उसको स्ट्रॉन्ग बनाएगा, rather कि जो पाँच बहुत दस। बढ़िया, बहुत बढ़िया है, बिकॉज दिस मार्केट इज अनऑर्गेनाइज नाउ। या। मेरी मेरी जो नानी है ना, उनका शहर है मुरादाबाद। हम लोग एक बार यूरोप गए थे, तो वहाँ का जो ब्रासवेयर है, जो घंटियां मिलती हैं न्यू ईयर में, वो वहां से बन के जाती है। अब मुरादाबाद आई थिंक घंटियों के लिए बहुत ज्यादा फेमस, आई थिंक बहुत जगह जाते और हैं। ब्रास के लिए, इट्स द ब्रास कैपिटल ऑफ ब्रास। इंडिया। या। यस। सो ब्रास वहां से हट, बट इट्स अनऑर्गेनाइज। सो व्हाट यू आर या। सेइंग दैट आई विल मेक इट ऑर्गेनाइज्ड। I can make a portal or whatever it is. I don't want to over engineer your thought. But the point is, Indian handicraft, just like the Prime Minister is trying to do, he normally gifts Indian handicraft to a lot या। of dignitaries and all, to showcase that, look, this is what exists in India because it's unorganized. So if you can organize it and sell it, क्या बात हुई कि यार $1 billion आइडिया है, बट करना कैसे साला, वो झोल है। उसको करना कैसे, उसको इम्प्लीमेंट हाँ। कैसे करना है। बिकॉज हर बंदा कहता है भाई पैसे तो मैं कमाऊंगा, मैं सारा वो करूंगा, लेकिन उबर ने भी किया ना, पूरा डिस्टर्ब कर दिया मार्केट। तो अगर आप नेक्स्ट उबर इन अनऑर्गेनाइज्ड आर्टिजन्स को आप बन सकते हो, तो बन जाओ। बहुत अच्छा आइडिया है। वही वो वही डिफिकल्ट पार्ट है इस पूरे प्रोसेस का कि आई हैव सीन फ्यू एपिसोड्स इन बिजनेस इनसाइडर, तो there is a company that builds globes, only just globes, handmade globes, different sizes, and they sell them for as high as $80,000 just for a single globe. So हम्म। that is what I am trying to understand कि अगर कोई भी ऐसा इंसान है जो ऐसे प्रोडक्ट्स बिल्ड, ऐसा ब्रांड बिल्ड करना चाहता है, सो हाउ टू पोजीशन दैट, क्योंकि हमारे जो अभी स्टार्टअप्स हैं, हाउ दे आर बीइंग बिल्ट इज फॉर द मासेस, ये डिस्काउंट ले लो, 50% ये डिस्काउंट ले लो, सो आई डोंट फील दे आर गोइंग फॉर द हाई एंड मार्केट। तो हाउ आर यू टारगेटिंग दैट विद आर्मर हैवी एंड बिल्डिंग अ बहुत ही स्टोरी along your brand? बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। नो, बट नथिंग इज मेड इन अ डे, Yeah. nothing is made in a year, nothing is made in 2 years also. It takes time. See, at the end of the journey, at the end of this thing, the most important point is, are you enjoying the journey that you are in, or is it a compulsion obligation for you?
जिंदगी को ना हम लोगों ने वैसे ही इतना मेस्ड अप कर दिया। आईआईटी जाओ, पढ़ो, मार्क्स लाओ, हाँ फिर फिर साला वहाँ वाइवा फाइवा कॉर्पोरेट। करो और बैठो कॉर्पोरेट में। हमने वैसे ही अपना, अब भूटान को देखो, उनको मस्त है, हम्म, वो मस्त है। अच्छा। उनको कोई मतलब नहीं है क्या है, वो दूध निकालेंगे, पियेंगे, सो जाएंगे। अच्छा, एग्जैक्टली उनको कोई ऐसा है मतलब उधर? नहीं है। थोड़ा इस पे तो बताओ। Bhutan is tourist ओके। and relax, right? I'm just saying it's not exactly so easy for anybody. I'm just hypothetically saying that in India क्या हो गया है, कंसोलिडेट करो, ब्लिंकिट लाओ, किसान का हक वो कर दो, ये कर दो। अभी सो मेनी हाँ इंडस्ट्रीज आर ट्राइंग टू कंसोलिडेट दी रिटेल, किराना की दुकान ऑनलाइन, हाँ कर नहीं पा रहे हैं। बिकॉज अल्टीमेटली तो फ्रेश जो चीज होती है वो तो फ्रेश ही है ना, जो ठेले वाला लाएगा पास के गांव से, वही फ्रेश होएगा। तो फिर ऑर्गेनिक चालू हो गया, कंफ्यूज हो गया है बिल्कुल, मतलब डोंट गेट कंफ्यूज, डोंट बी इन अ रेस, डोंट बी इन अ रेस, रिलैक्स। नींद मत अपनी खराब कर भाई इस यंग एज में। रिलैक्स, रिलैक्स। When you are in a journey or you are starting a journey, first you have to ask yourself, am I going in the right direction? Is this the path I want to choose, which is a desert or the ocean? Can I swim or can I walk? Or is it a jungle road where I can fight the animals that will come and attack me? There are various directions for you. All right. You are a walker. You can take heat, take the desert. You've chosen the desert. The desert will throw certain challenges, but you are ready for it because mentally you've said, you've calibrated कि भाई ये desert पे जो भी आएगा, I will tackle it. सही। Enjoy the journey. भागो मत। वो कहते हैं पंजाबी में, रोड़ा ना पा। मतलब don't put obstacles in front of roda na pa. So that's why I'm saying just relax, and to the youth also, and to the people who are wanting to start, for me also, क्योंकि I've lost my sleep. This is the सही। biggest learning. मैं कोई बहुत बड़ा बोखाल नहीं, मैं एक चीज सूझी भाई, don't lose your sleep. सही So plan well and enjoy the journey. That journey will not be fruitful, my friend. It won't be fruitful. But at you will find your oasis in the desert. चलता रहेगा, नहीं मिलेगा, but suddenly you will say, oh shit, I found it. You will give a pat on your back. Maybe it's not the most breaking news kind of a story. Maybe you are not on page 3, but you have found your oasis. Then retire. Retire well. Spend time with your family and friends. Retire like a man. Don't retire like a loner. Right? So enjoy your journey. Love your journey. Choose your journey well. Enjoy it. Retire. That's very important. ये जो सक्सेस की जो दुनिया है ना, उसमें अगर फंसोगे, लॉट ऑफ माई इन्वेस्टर्स टेल मी स्केल अप, रेवेन्यू गोइंग डाउन। मैंने कहा सर एक सेकंड, आपने पैसे दे दिए ना, अभी अभी तो रुक जाओ। अब पैसे हैं मेरे पास, मुझे पता है, आई डोंट वांट टू बर्न योर मनी, लेट मी मैनेज इट। यू ट्रस्टेड मी, लेट मी मैनेज इट, इट विल स्केल एट अ प्रॉपर टाइम एंड द चूजिंग दैट आई सेलेक्ट फॉर माई सेल्फ। सो रिलैक्स। अभी हड़बड़ हड़बड़ में पैसे खत्म हो जाएंगे, फिर मैं चंदा मांगने फिर से चला जाऊंगा मार्केट में। मैंने कहा लेट मी कैलिब्रेट, इट्स नॉट दैट आई एम टेकिंग द राइट डिसीजंस, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द बेसिक्स इन लाइफ। व्हाट इज द बेसिक्स इन लाइफ? A child starts moving when he has strength in his legs. So go back to the basics. धीरे धीरे चलो, चलना भी सीखोगे, दौड़ना भी सीखोगे। पालने से उतर के साइकिल थोड़ा ना करने लग जाओगे, चोटें फोटे लग जाएंगी, हाँ टूट जाओगे। मत करो वो सब। Enjoy the journey. सो इफ वी वांट टू कंक्लूड दिस, लाइक जो अभी बोला आपने, होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, एंड जो बीच की जर्नी है, फुल एंजॉय। हाँ No and obligations. one more Enjoy. thing that I picked from it कि enjoy and relax, क्योंकि हम हमारी जनरेशन में क्या हो गया है ना, इवन आई फील इट, वन डे आई डिसाइड कि यार आई गो स्लोली, आराम से करेंगे, धीरे धीरे आई टेक माई ओन टाइम, यू बिल्ड माई स्टार्टअप धीरे धीरे, बट
आई ओपन सोशल मीडिया, वहां देखता हूँ कि एक कोई लड़का है जिसने 21 साल में ये करोड़ों का धंधा बना लिया। देन इट स्टार्ट्स टिकिंग, द टाइम क्लॉक स्टार्ट्स टिकिंग इन माय हेड कि यार जल्दी, उसने 21 साल पे कर लिया है, तुम भी 21 के होने वाले हो, जल्दी करो। सो Like the दैट इज guy from Kentucky Fried Chicken said, "Yaar, I am हाँ, old, but it doesn't mean that I didn't achieve shit in my life. या I created a parallel to McDonald's, right? So don't have the life is long. सही। मेरा बच्चा जब कोई टेबल नहीं होता ऐसे यार रिलैक्स लेट हिम लिव हिज लाइफ यार अभी नहीं करेगा तो कल कर लेगा वेयर इज द हरी ऐसा कुछ वो नहीं है फंडा नहीं है ऑफ कोर्स यू हैव टू पेस अप लाइक अ लॉन्ग डिस्टेंस रनर यू हैव टू कीप पेस you have to keep pacing but at your potential don't burn yourself out you have to keep pace at your everybody has a potential कोई इंजन पहले गर्म हो जाते हैं और थक जाते हैं कोई इंजन बाद में गर्म होते हैं और चलते रहते हैं so it's all pacing and loving what you're doing and things like that one thing my adjutant used to tell me when we were passing out he said gentlemen one thing remember in your life good better best never let them rest till the good is better and better is best ग्रेट, but your best but your best बेस्ट।